Let's start with the basic concept of chromosome, DNA, and genes. All living organisms are made up of cells. So cell क्या हुआ? Cell is the basic structural and functional unit of our life. ये हम जानते हैं और हम पढ़ते आए हैं, ये basic चीज़ है. Let's start with the human beings. Human beings are also made up of cells. The question is here question क्या है यहाँ पे कि are all the cells having same shape and size? No. We are having different types of cells in terms of their shape and size. Like nerve cell is the longest cell, RBC is having different shape, oval, right? Hair cell is having different shape, muscle cell is having spindle shape. But एक चीज़ यहाँ पे common है. All these cells are having similar basic structure. अब उस सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? 3 बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, राइट? एंड इनसाइड द सेल there is a fluid known as cytoplasm, and at the center of the cell there is a condensed body known as nucleus, and this nucleus is known as headmaster of the cell. इसको हेडमास्टर क्यों बोला? इसके पास कुछ ऐसा होगा जो इसे हेडमास्टर बोला गया, राइट? Why? Because it contains some kind of materials which carry some kind of information for future generation, for further generation. So let's focus on the nucleus now. Inside the nucleus, there are thread-like structures present, known as chromatin, right? Thread-like structures, chromatin fibers. अब ये जो chromatin है, ये किससे बना है? Chromatin is composed of basically DNA and protein. How it is arranged, how it is formed. Protein, histone proteins, generally in eukaryotic organisms, histone proteins are wrapped around the DNA and they form one structure known as nucleosomes. Nucleosomes is one body, right? So nucleosome बना DNA और प्रोटीन से. So chromatin is basically composed of nucleosomes. ये nucleosomes बनते चले जाएंगे और तो थ्रेड बीड्स की तरह थ्रेड में जैसे एक माला होती है उस तरीके से क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम्स होंगे, राइट? नाउ एज द सेल अंडरगोज अ सेल डिवीजन, दिस क्रोमैटिन फॉर्म्स व्हाट? क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? क्रोमैटिन फाइबर्स. अब क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी, कलर्ड बॉडी. अब हमें इसमें कोई भी स्टेन अगर डालेंगे तो वो स्टेन का कलर इसमें अटेन मतलब ये कर सकता है, आ सकता है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में वी आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सो क्या ये सारे पेयर्स सेम हैं? ओके, लेट्स सी. Out of these 23 pairs of chromosomes, 22 pairs of chromosomes are known as autosomes, and remaining one pair is sex chromosome. और वी कैन से एलोजोम. ऑटोजोम जो है बॉडी सेल्स जो भी हैं उनमें पाया जाता है, ये सब सेम होंगे 22 पेयर्स. बट एक जो पेयर है एलोजोम जो है वो डिफरेंट होगा बिकॉज इट इज़ बेसिकली फाउंड इन गैमेट्स, ओवा एंड स्पर्म. दीज आर द गैमेट सेल्स, राइट? इन ओवा which is a female gamete, in ova there is X chromosome, and in sperm this is a male gamete. Y chromosome is present in male gamete. Comparatively X और Y दोनों 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे साइज में सेम होंगे, बट इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इस पेयर में X क्रोमोसोम Y comparatively to the Y chromosome, X chromosome is longer. Let's have an idea of क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि इसके पास आर्म्स हैं विच आर नोन एज क्रोमैटिड, राइट? एट द मिडिल देयर इज वन कंस्ट्रक्शन नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको सेंट्रोमियर बोला गया है, और सेंट्रोमियर पे ही काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है. काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा, राइट? एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है. देयर इज वन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो हेयर आर्म्स के साइड में, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. अब इनसाइड द क्रोमोसोम, राइट, इनसाइड द क्रोमोसोम व्हाट इज प्रेजेंट? डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा जिसका. लेट्स सी
अब हमने मान लो एक बॉडी में से डीएनए को हमने पहले क्या किया, इफ़ वी वांट टू स्टडी अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर, व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू आइसोलेट द क्रोमोसोम, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट आउट द क्रोमोसोम्स एंड देन वी कैन आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड वी कैन हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर. लेट्स सी, हमने डीएनए में से हमने क्रोमोसोम में से डीएनए निकाला. नाउ वी कैन सी इसका स्ट्रक्चर कैसा है. इट्स अ काइंड ऑफ लेडर लाइक स्ट्रक्चर, राइट. इट्स हैविंग लेडर लाइक स्ट्रक्चर. और वी कैन से जैसे दो स्ट्रैंड्स हैं. इट इज डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. It is a genetic material in all the living organisms, most of the living organisms. So there are two kinds of genetic material, DNA and RNA. So अभी हम DNA के बारे में पढ़ रहे हैं. So DNA में दो strands होते हैं. DNA is having two strands and both are helically coiled around each other. Polynucleotide chain, it is a polynucleotide chain. Why we are calling it as a polynucleotide chain? Because it is composed of nucleotides, more than 2 nucleotides. That's why we are using the term poly here. And this nucleotides, one nucleotide composed of 3 components. What are they? These are nitrogenous base. First one is nitrogenous base. Nitrogenous bases are of two types, purines and pyrimidines. Purines are double ring structures, right? And pyrimidine is a single ring structure. Purines दो तरीके के होते हैं, एडेनाइन एंड गुआनाइन. 4 बेस होंगे, राइट, जो प्यूरिन्स और pyrimidine में डिवाइडेड हैं. Purines are of two types, adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine and thymine. Thymine is present in DNA, and in place of thymine, uracil is present in RNA. Okay. अब एक शुगर है पेंटोज शुगर. राइबोस शुगर RNA में होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होगा वो DNA में होगा. And the other one is phosphate group. So these are the 3 basic components which are present in nucleotide. So DNA is a genetic material carrying information from the parents to the offspring. यही है जो बताएगा कि बच्चे के बाल कैसे होंगे, right? What kind of hair color baby will be having, and then eye का color, skin color. So all these things, all this information, who is carrying? DNA. अब DNA में एक segment है. DNAs are having segments, right? The segment, or we can say section of DNA is known as gene. One segment है, यहाँ से एक उठाया हमने, उसको जीन बोलेंगे. अब इस जीन में जो नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं उसको रीड जो करेंगे, so it will read and it codes for protein, right? One gene is also known as one cistron. So one cistron, or we can say one gene codes for one protein, and protein is carrying information. Protein is basically carrying information for cell. Cell बनाएगा protein, cell से tissues बनेंगे, and then tissues build up organs, and from the organs whole body is built up, right? So this is how a body is made up of cells, right?